अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस डिवाइस के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देंगे इसका नाम है Xiaomi Poco C55। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आप गैजेट टेक रिव्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। Xiaomi Poco C55, released 2023, the 28th of February, 192 grams, 8.8 mm thickness, Android 12, MIUI 13 for POCO, 64 GB, 128 GB storage, micro 6.71, 720 x 1000, 650 pixels, 50 MP, 1080p4, 6 GB RAM, Helio G85, 5000 mAh LiPo. Network technology GSM, HSPA, LTE launch announced 2023, the 21st of February, status available. Release 2023, the 28th of February, BODY dimensions 168.8 x 76.4 x 8 mm, 6.65 x 301 x 035 in, weight 192 grams, 6.77 ounces, build glass front, Panda glass, eco leather back, SIM dual SIM, nano SIM, dual standby, dust and splash resistant display type IPS, LCD size 6.71 inches, 106.5 square centimeter. Approximately 82.6% screen to body ratio, resolution 720 x pixels, approximately 268 ppi density, protection Panda glass platform, OS Android 12, MIUI 13 for POCO, chipset MediaTek 6769 Mozambican MediaTek Helio G85, 12nm, CPU Octa Core, 2 x 2.0 GHz Cortex A75 and 6 x 1.8 GHz Cortex A55, GPU Mali G52, MC2 MEMORY card slot, micro dedicated slot, internal 64 GB, 4 GB RAM, 128 GB, 6 GB RAM, eMMC 5.1 main camera, dual 50 MP, f1.8 wide, PDAF 0.08 MP, depth, features LED flash, HDR video 1080p 830 fps selfie camera, single 5 MP, features HDR video 1080p 830 fps, sound loudspeaker yes, 3.5mm jack yes, comms WLAN, Wi-Fi 800 2.11a, B, G, N, AC, dual band Bluetooth 5.0, a 2dp, LE positioning, GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NFC, no radio, FM radio, recording, USB mic, Cruise 2.0, OT features, sensors, fingerprint, rear-mounted, accelerometer, virtual proximity sensing, battery type, LiPo 5000 mAh, non-removable charging, 10W wired, MISC colors, cool blue, power black, forest green, 0 Saudi Riyal 87 Halala W, kg, head, 0.77 W, kg body, price 9,999 rupees. अब हम इस डिवाइस की पिक्चर्स को देखते हैं डिटेल में और इसकी स्पेसिफिकेशन को डिस्कस करते हैं कि कैसी स्पेसिफिकेशन दी गई इस प्राइस रेंज में। इसकी अब हम बात करते हैं स्क्रीन साइज़ में। स्क्रीन साइज़ जो दिया गया 6.7 इंच स्क्रीन साइज़ दिया, काफ़ी अच्छा स्क्रीन साइज़ दिया गया, जिसमें पिक्सल जो दिए गए हैं वो मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे पिक्सल दिए गए हैं स्क्रीन में, लेकिन नॉर्मल ठीक हैं, नॉर्मल दिए गए हैं पिक्सल्स। और अब इस बात करें तो कैमरे की 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है इसमें, और 50 मेगापिक्सल के कैमरे से आप एक अच्छी और नॉर्मल पिक्चर खींच सकते हैं, बना सकते हैं, टिकटॉक वीडियोस भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं होगा, नॉर्मल रिजल्ट मिलेगा आपको इस डिवाइस में। और एक और देखें तो इसकी जो मोटाई है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल मोटाई है, ब्रिक फ़ोन लग रहा है और स्मार्टफोन है ये। इसमें जो एंड्रॉयड वर्जन दिया गया 12 दिया गया है। और इसकी स्टोरेज की बात करें तो ये 2 स्टोरेज में आपको अवेलेबल होगा, 64 और 1 to 8 GB स्टोरेज में अवेलेबल होगा। और इसके बाद हम इसकी रैम के बारे में डिस्कस करें तो 4 और 6 GB रैम में मिलेगा। और 4 और 6 GB रैम होने की वजह से इसमें आपको एक अच्छा गेमिंग खेलने में अच्छी हेल्प देगा। 6 GB रैम वाला वेरिएंट जो है, आपकी फ़ोन की स्पीड अच्छी होगी और आपके ग्राफिक भी अच्छे होंगे।
और अब इसकी बैटरी की बात करें तो इसका बैटरी काफ़ी अच्छी दी गई है, 5000 mAh की बैटरी है। बैटरी के लिहाज से आपको अच्छा बैकअप टाइम देगा। पबजी वगैरह खेलते हैं तो उसमें आपको बार बार चार्जिंग करना पड़ेगा, एक अच्छा टाइम मिल सकता है आपको गेम खेलने के लिए और पिक्चर्स और वीडियोस बनाने के लिए। और इसके बाद हम इसके बारे में बात करें डिज़ाइन के बारे में, बैक पे जो कैमरा लगा हुआ है उसका भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिया गया है और ये काफ़ी सारे कलर्स में अवेलेबल है, 4-5 कलर्स में, यूनिक कलर्स में अवेलेबल है फ़ोन। और इसके बाद हम देखते हैं ये जो फ़ोन है इसमें जैक भी दिया गया है और जो एक केबल दी जाती है इसके साथ चार्जिंग के लिए, वो केबल जो है वो ओल्ड केबल दी गई है, इसमें 3.0 केबल नहीं है, ठीक है। और पीछे पोको की डिज़ाइनिंग की गई है और फ्लैश भी दिया गया है साथ में। देखने में डिवाइस ठीक लग रही है, यूनिक कलर्स में है और आप इससे एक अच्छा पिक्चर्स भी बना सकते हैं, गेमिंग भी कर सकते हैं। लेकिन इस प्राइस रेंज में कोई और कंपनी इस रेंज में आपको कोई डिवाइस ऑफ़र नहीं करे जिस रेंज में ये पोको आपको मिल रही है डिवाइस। थैंक यू।